प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। तो सब ਦਾ स्वागत करता हाँ अज की वीडियो ਵਿੱਚ। ਅੱਜ मैं सबनों करवाउण जा रहा मॉडल टैसट पेपर साइंस क्लास 10वीं का। तो जे तुहाने अज तक मेरे चैनल सबसक्राइब नहीं किया तो वो कर दो, नाल कर दो इस वीडियो को लाइक, उस बैल आइकन भी दबा दिओ ताकि तुहानूं मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सब तो पहला मिले। तो चलो शुरू करते हाँ। क्लास 10वीं का पेपर है। फर्स्ट प्रश्न, Gurpreet bought some mint from the market. After some days, there was a strong smell from mint. Why did this happen? तो इसका उत्तर है डी, डिस्प्लेसमेंट। इसका उत्तर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, इसका उत्तर है बी, ऑक्सीडेशन। सेकंड, व्हेन वी मिक्स लीड नाइट्रेट एंड पोटेशियम आयोडाइड, येलो प्रेसिपिटेट इज फॉर्म्ड। कैन यू नेम द प्रेसिपिटेट? तो इसका उत्तर है डी, लीड आयोडाइड। अगे थर्ड, pH ऑफ अ न्यूट्रियल सोल्यूशन इज। तो इसका उत्तर है बी, 7। फोर्थ, टार्टरिक एसिड इज फाउंड इन। तो इसका उत्तर है डी, टामारिंड। अगे फिफ्थ, द एबिलिटी ऑफ मेटल्स टू बी ड्रॉन इनटू थिन वायर्स इज नोन एज डक्टिलिटी। ड्यूरिंग द इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग ऑफ कॉपर, कैथोड इज मेड ऑफ। तो इसका उत्तर है ए, इम्प्योर कॉपर। सेवंथ, व्हाट इज अ फुल फॉर्म ऑफ ATP? तो इसका उत्तर है एडेनोसिन ट्रिफॉस्फेट। अगे एट्थ, व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज रिलीज्ड फ्रॉम गार्ड सेल्स? तो इसका उत्तर है बी, गार्ड सेल गेट ओपन। नाइन्थ, सेलेक्ट द मोड ऑफ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो इसका उत्तर है डी, ऑल ऑफ द अबव। पिछले वाला जो सी व्हाट हैपन्स व्हेन वाटर इज रिलीज्ड फ्रॉम गार्ड सेल इज द डी, ड्राइड अप आवेगा। आगे चलते हैं आप। टेंथ, विच पार्ट ऑफ द ब्रेन कैन बी डिवाइडेड इनटू टू हेमिस्फीयर? तो इस तरह से हिंड ब्रेन। 11th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनवॉलंटरी एक्शन? तो इस तरह डी, च्यूइंग। अगे द डिसीज कॉज ड्यू टू सेक्शुअल कंटैक्ट इज। तो इस तरह ए, एड्स। अगे 13th, द ह्यूमन विच हैज़ XY क्रोमोसोम इज कॉल्ड। तो इस तरह सी, मेल। 14th, विच ऑफ द फॉलोइंग मटीरियल कैन नॉट बी यूज टू मेक अ लेंस? तो इस तरह सी, डी, क्ले। अगे 15th, the mode of reproduction in Spirogyra is। तो इस उत्तर है डी, fission। What will be the color of sky when seen from moon? तो इस उत्तर है सी, ब्लैक। आगे की है 17th, which of the following metal is used in making the filament of electric bulb? तो इस उत्तर है सी, टंगस्टन। आगे 18th, choose the instrument used to protect electric circuits from short circuiting and overloading। तो इस उत्तर है सी, फ्यूज़। अगेन 19th, व्हाट इज़ द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ ओजोन? तो इस तरह O3। अगे 20th, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट नॉन बायोडिग्रेडेबल? तो इस तरह ए, वेजिटेबल पील। अगे मैच कॉलम ए विद कॉलम बी। अ मैटर, इलेक्ट्रिक करंट। यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस, ओहम। नियर साइटेडनेस, कनकेव लेंस। मिरर फार्मूला, एथनॉल। ड्रिंकिंग एल्कोहल का आएगा एथनॉल। मिरर फार्मूला है 1/V + 1/U = 1/F। अगे आप चलते हैं 2 मार्क्स क्वेश्चन उत्ते। तो फर्स्ट क्वेश्चन, कंपेयर फंक्शनिंग ऑफ एल्वेओली विद इन द लंग्स एंड नेफ्रॉन्स इन द किडनीज एट रिस्पेक्ट टू देयर फंक्शंस। दिस इज द कंपैरिजन ऑफ एल्वेओली इनटू द लंग्स एंड अगे इस तरह की है। Nephrons in the kidneys are as follows. Alveoli in the lungs are tiny air sacs that are located in the lungs that help in a rapid exchange of gases. Nephrons in the kidneys consist of glomerulus and tubules through which glomerular filtrate passes. Again, third question, why should magnesium ribbon be rubbed before burning in the air? This is magnesium ribbon should be cleaned with sandpaper because before burning to remove the layer of magnesium oxide because it is very much combustible. Okay. Fourth, why should curd and other sour substances not to be kept in brass or copper vessels? When sour substances like curd and kept in brass or copper vessels, the lactic acid in curd reacts with metals which act to the corrosion of vessels as well as formation of harmful salts that can't be consumed. Again, fifth, what is the role of acid on our stomach? तो इस तरह stomach acid also known as gastric acid is a colorless watery fluid. It is very acidic and aids digestion by breaking down meals. This makes it easier for your body to absorb nutrients when food passes through your digestive tract.
Okay, sixth, what are the two properties of carbon which lead to the huge number of carbon compounds we see around us? Catenation and tetravalency are the two properties of carbon which lead to the formation of a large number of carbon compounds. आगे चलते हैं सेवन्थ, हाउ डज आवर बॉडी रिस्पॉन्ड व्हेन एड्रेनलिन इज सेक्रेटेड इन आवर ब्लड? तो इसका उत्तर है adrenaline is usually released into the blood and has many key functions such as increasing blood pressure, including heartbeat and enlargement of pupils. आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8, हाउ इज द सेक्स ऑफ चाइल्ड डिटरमाइंड इन ह्यूमन बींग्स? तो इस तरह से सेक्स ऑफ अ चाइल्ड इज डिटरमाइंड बाय द टाइप ऑफ क्रोमोसोम ही शी रिसीविंग फ्रॉम द फादर. If she or he get X chromosome, then the child will be a girl, and if he or she get a Y chromosome, then child will be a male. आगे चलते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर. तो इस उत्तर द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कनकेव मिरर is a point on the principal axis at which a light ray parallel to principal axis converges after reflection. आगे चलते हैं आपका आगे किया जाएगा क्वेश्चन 10, व्हाट इज द एकोमोडेशन इन ह्यूमन आई? तो इस तरह द प्रोसेस बाय विच सर्टेन मसल्स फंक्शन टू चेंज द फोकल लेंथ ऑफ आई सो दैट द इमेज इज क्लियरली फॉर्म्ड ऑन रेटिना इज कॉल्ड एकोमोडेशन ऑफ द आई. आगे आगे चलते हैं आप केड़े एकोमोडेशन ऑफ द आई तक हो चुका से अपना क्वेश्चन नंबर 11, गिव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स. तो इसी तरह मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स नेवर इंटरसेक्ट विद ईच अदर. मैग्नेटिक फील्ड लाइन फॉर्म अ क्लोज्ड लूप. फील्ड लाइन्स हैव बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड एट एनी पॉइंट ऑन द फील्ड. देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ वेक्टर क्वांटिटी. आगे क्वेश्चन नंबर 12, what is ozone, how does it affect an ecosystem? तो इस तरह ozone is a gas made of 3 atoms of oxygen. Ozone is a vital gas for all sorts of ecosystems on earth as it protects the environment from the damaging effect of UV radiation created by the sun. Again, question number 13, which two gases are released during electrolysis of water? Mention chemical equation related to it. तो इस तरह in electrolysis of water हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन गैसेज आर रिलीज्ड. केमिकल रिएक्शन तुसी खुद लिख सकते हो. अगे प्रश्न 14, वाई डू स्टार्स ट्विंकल? तो इस तरह स्टार सीम टू बी ट्विंकल इन द नाइट ड्यू टू इफेक्ट्स ऑफ अर्थ एटमोसफेयर. अगे क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट वुड बी कॉन्सिक्वेंस ऑफ डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन आवर बॉडीज? तो इसका उत्तर किया जाएगा द डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन मेक्स एन इंडिविजुअल एनेमिक विच मीन्स फ्यूअर रेड ब्लड सेल्स. The deficiency of hemoglobin will decrease the oxygen carrying capacity of the blood. आगे चलते हैं यहाँ पर क्वेश्चन 16, a doctor has prescribed a corrective lens of power plus 1.5D. Find focal length of lens. It is prescribed lens diverging or converging. आगे 3 marks क्वेश्चन एडे में कोई भी 6 अटैम्प्ट कर सकते हो. When an iron nail is dipped in copper sulfate solution, what will be the observation after some time? Explain with the equation. Question number 18, what is the homologous series? Explain with the help of example. Question number 19, draw the structure of neuron and explain its function. Question number 20, write two differences between real image and virtual image. What will be the size of image formed by a convex lens when object lies at 2f? Question number 21, what is myopia? What are the reasons of it? How the defect can be corrected? Question number 22, explain biological magnification. Question number 23, how does chemical coordination takes place in plants? Question number 24, the focal length of a concave lens is 2 meter. Calculate the power of the lens. Question number 25, how would you distinguish experimentally between an alcohol and a carboxylic acid? 5 marks question तो आप आ चुके हैं. Question number 26, differentiate between sexual reproduction and asexual reproduction. B, write two advantages of sexual reproduction over asexual reproduction. या इस जगह तो कर सकते हैं. ड्रॉ अ लेबल डायग्राम ऑफ द लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन ऑफ अ फ्लावर. व्हाट आर द चेंजेस सीन इन गर्ल इन द टाइम ऑफ प्यूबर्टी? क्वेश्चन नंबर 27, डिफरेंशिएट बिटवीन मेटल्स एंड नॉन मेटल्स. और व्हाट आर एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स? गिव 2 एग्जांपल ऑफ एम्फोथेरिक ऑक्साइड्स. बी, व्हाई डू आयोनिक कंपाउंड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स?
Question number 28. What is Ohm's law? How will you verify Ohm's law in the laboratory? Or A. An electric heater of resistance 8 ohms draw 15A from service mains for 2 hours. Calculate the rate at which heat is developed in the heater. B. Why is series arrangement not used in domestic circuit? So आज की वीडियो के लिए इतना ही. मैं आप सभी को मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में. इस वीडियो को पूरा देखने के लिए थैंक्स.